good evening, and welcome to BYJU'S exam prep. I hope I'm clearly audible and visible to everyone watching me live. Good evening, everyone. My name is Alpa Sharma, and just a minute. Yeah, so my name is Alpa Sharma. In today's session, we are going to be discussing the basics of critical reasoning that we had been doing in the last few classes. Today is a continuation of that class. So, hi, Tulika Pranjali. We've had a couple of classes on how to find assumptions. We've had a couple of classes on how to find conclusions. But these are mostly important for beginning off with one-liner statements. तो अगर आप वन लाइनर क्वेश्चंस करते हो कि एक स्टेटमेंट दे दिया उसका आपको assumption निकालना है या कंक्लूजन निकालना है, ऐसी चीजों में आप वो दोनों क्लास की बेसिक थ्योरी आपको काम आ सकती है. बट अगर हम डायरेक्ट क्लैट के पैटर्न के क्वेश्चंस की बात करें जहां आपके पास में यू हैव फुल पैराग्राफ्स लाइक एन एंटायर आरसी गिवन टू यू and then you have to answer critical reasoning questions, the most important, the most integral part of your ability to solve that critical reasoning passage in the questions correctly is your ability to identify the argument of the author. क्योंकि critical reasoning को correct solve करने की आपकी सारी ability आपके argument पे depend करती है. अगर argument नहीं पता तो आपको क्वेश्चंस के आंसर भी सही नहीं पता होंगे. तो आज की क्लास और जो नेक्स्ट क्लास होगी अंडर द बेसिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, अंडर टू क्लासेस वी गोइंग टू बी अटेम्प्टिंग एट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एन आर्ग्यूमेंट इज और वो आर्ग्यूमेंट ढूंढना कैसे है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस पे फोकस करना जरूरी है, इस पे भी. तो बिफोर वी बिगिन विद द एजेंडा ऑफ द क्लास एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या करेंगे. एजेंडा है वी अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग. आज का टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द आर्ग्यूमेंट और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक ही करेंगे क्योंकि उतना ही बहुत है, आई एम श्योर आपके लिए समझने के लिए कि ये कौन सी मिस्ट्री है. बिफोर वी बिगिन वी हैव लॉन्च्ड अ CLAT 2024 comprehensive program. If you wish to prepare with BYJU'S exam prep, make sure you call the counselors on this specific number to know more about the program that we're offering to you. Make sure you rush up. You see us in the classes very soon. Additionally, we're offering a 3 days free trial for you. तो एनरोल करो फ्री ट्रायल के लिए 3 दिन का. इसका लिंक होगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जल्दी से रजिस्टर करो. कम टू आवर क्लासेस एंड देन एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल. अच्छा, I can do small paragraphs but I don't perform well when it comes to longer passages, प्रांजलि. तो यही आज अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, कोशिश ये होगी कि आज हम ये समझे कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है. तो सबसे पहले हम एक बार वापस जाते हैं और ये बात करते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट एक लेमैन टर्म में होती क्या चीज है और ये क्यों जरूरी है हमारे लिए आर्ग्यूमेंट को समझना. ठीक है, देखिए कोई भी पैसेज चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो, इंग्लिश के लिए लिखा हो रादर, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग के लिए लिखा हो, both the passages, the kind of passages that we get under these two sections in CLAT, the author has written these passages with an idea in his mind. And he wants you to know that idea that he believes in. Most of the questions under both the sections and passages are dependent on that idea जो ऑथर के दिमाग में है, जिसको समझाने के लिए ऑथर ने ये पूरी कहानी तुम्हें सुनाई है. तो अगर आप देखेंगे पास्ट में हमारे पास में शर्लॉक होम्स के पैसेजेस थे. क्यों लिखे हुए थे वो पैसेज? 3 तरीके के डिटेक्टिव्स कंपेयर किए थे, फादर ब्राउन, शर्लॉक होम्स, अगाथा क्रिस्टी का कैरेक्टर. क्यों कंपेयर किया था? क्यों? बोलना क्या चाह रहा है ऑथर. तो ये सिंपल क्वेश्चन का आंसर बोलना क्या चाह रहा है ऑथर, यही क्वेश्चन है जो आर्ग्यूमेंट है. जो ऑथर बोलना चाह रहा है इन अ नटशेल इस पूरी कहानी में, यही वो आर्ग्यूमेंट है. अगर क्रिटिकल रीजनिंग के लैंग्वेज में देखेंगे तो उसे हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे. अगर इंग्लिश के लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे, इंग्लिश सेक्शन पर्टेनिंग अगर आप देखेंगे तो उसे हम मेन थीम बोल देंगे. कहानी एक ही है, मेन थीम ही आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ही मेन थीम है. देखना उसको हमें एक ही तरीके से है, आंसर एक ही तरीके से करना है, जस्ट दैट सेक्शंस अलग अलग है. सो सिंपल क्वेश्चन, ऑथर कहना क्या चाहता है. जब आपको ये पता लग गया ऑथर क्या कहना चाहता है, तो हम क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग कर रहे हैं,
अब उस आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम समरी भी निकाल सकते हैं, कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस भी करेक्ट कर सकते हैं। अजम्पशन भी आर्ग्यूमेंट का ही होगा, तो अजम्पशन तो तभी सही होगा जब पैसेज का आर्ग्यूमेंट समझ में आएगा। मतलब इन नटशल कहानी ये है कि आर्ग्यूमेंट समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है एक पैसेज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यस निखिल। So ultimately, our ability to understand the argument is very, very important. We have to work on that. And through this class and the next class, 2 parts, we're going to attempting at understanding what the argument is. Argument पे ही सारी कहानी है। एक सैम्पल क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा वार्म अप करते हैं और फिर थ्योरी डिस्कस करेंगे। 2011 का पेपर क्लैट का, उससे एक क्वेश्चन है क्रिटिकल रीजनिंग का। आपको आर्ग्यूमेंट ही ढूंढना है उस क्वेश्चन में। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर। हाँ, लास्ट 2-3 साल में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो वापस आ सकता है 2023 में। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर बात करते हैं कि ढूंढना कैसे है हमको आर्ग्यूमेंट। ये पैराग्राफ दिया हुआ आपको और आपको बताना है कि बेसिकली कौन सा ऑप्शन आर्ग्यूमेंट बताता है। ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ, अभी पढ़ लीजिए सारे ऑप्शंस और मुझे आंसर बता दीजिए आपका चैट बॉक्स में। गुड लक एवरीवन। वार्म अप है, ट्राई करो। ठीक है, बी बी बी। कूल। आई थिंक मेरे पास एक यूनानिमस आंसर है सबका बी, क्योंकि 3 गर्ल्स ने तो ऑलरेडी आंसर कर दिया है बी। आंसर इसका करेक्टली बी है। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द आर्ग्यूमेंट इज। तो दिस इज अ सैम्पल क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चंस आए थे इन द हिस्ट्री ऑफ क्लैट। अब क्या होगा, इस तरीके के पैराग्राफ्स का लेंथ इंस्टेड ऑफ दीज 500 वर्ड्स तक हो जाएगा। लेंथ काफी इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे 5 पैराग्राफ्स आ जाएंगे इंस्टेड ऑफ 1। क्वेश्चन का पैटर्न सिमिलर रहेगा, आर्ग्यूमेंट ढूंढना। तो छोटे पैराग्राफ्स में आर्ग्यूमेंट ढूंढना कंपैरेटिवली इजियर है। When the length of the passage grows, because we can't do that lengthy passages in the YouTube live classes, we have refrained from bringing a longer one for you. When the length grows, you tend to deviate. कि अच्छा ये आइडिया शायद ये है, शायद वो है। आइडिया है क्या, हम घूम जाते हैं वर्ड्स में, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन और इतने सारे पैराग्राफ्स होते हैं। दैट इज व्हाई लॉन्गर पैराग्राफ्स, लॉन्गर पैसेजेस, 500 वर्ड्स के जो एवरेज वर्ड लिमिट वाले होते हैं, वहां आर्ग्यूमेंट ढूंढना और डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए, एक सैंपल क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि यहाँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने करेक्टली आंसर किया, एक बार जल्दी से मैं ब्रीफ कर देती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने आंसर नहीं किया। यहाँ 2 तरीके के एरियाज को कंपेयर किया गया था, रामपुरा को और इंग्लैंड को। और एक स्टेटमेंट दिया गया था कि कहीं कहीं, जैसे दोस्त, तो दोस्त को भी भाई बोलते हैं हम, जैसे रामपुरा में तो भाई है मेरा, है ना, है तो दोस्त, यू डोंट हैव अ ब्लड रिलेशन, येट वहां ब्रदरहुड आ जाती है। तो इंडिया में रामपुरा जैसे रूरल एरियाज में हम ब्रदरहुड को इंटीमेसी का तरीका मानते हैं, लेकिन इंग्लैंड में हम फ्रेंडशिप को इंटीमेसी का तरीका मानते हैं।
सो अल्टीमेटली एक कंक्लूजन निकाला गया यहाँ इस पूरे कोटेशन के साथ, अलग अलग एरियाज को कोट करते हुए एक कंक्लूजन निकाला, और ये कंक्लूजन ही मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ. In another words, can I say conclusions drawn from a passage ought to be your argument? Conclusions drawn from a passage tend to be your argument of the passage. Can I say that? Think carefully, because we've just had an example discussing a similar thing. Yeah. Yes, no, I'm waiting for your answers. Confused? चलिए मैं आपको फर्स्ट पॉइंटर दिखाती हूँ. So my first pointer is, अच्छा by the way ये एक सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर बाद में करेंगे. ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट का, तो इस पे बाद में आएंगे. पहला देखते हैं. Yes, a conclusion can be your main argument of the author. Yes, Pranjali. Yes. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कंक्लूजन्स आर्ग्यूमेंट की तरह एक्ट करते हैं. जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि दो एरियाज को कंपेयर किया गया, कहीं भाई दोस्त है, कहीं दोस्ती में भाईचारा है, तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग चीजें देखी गई. ये जो अलग अलग एरियाज में अलग अलग चीजें देखी गई, उनसे कुछ कंक्लूजन निकाला गया, और वही कंक्लूजन मेरा मेन आर्ग्यूमेंट था, ऑप्शन बी. That exactly is what the conclusion was and the argument was. So remember the first step. Now, my theory of teaching how to identify an argument is divided into 5 steps. Today we're going to be discussing 2 of those steps. The next class focuses on the remaining 3 steps. The first step is identify the conclusions given in the passage. Let me give you a disclaimer beforehand. It isn't a compulsion that every time a passage has a conclusion. But if it has a conclusion, the conclusion very likely is going to be your argument of the passage. हमको सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या उस पूरे पैराग्राफ में ये लिखने के लिए, ये निकालने के लिए पूरा पैराग्राफ लिखा गया था. अगर हाँ, तो वही आपका आर्ग्यूमेंट है. एक एग्जाम्पल से उसको सॉल्व करते हैं. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस पैराग्राफ एवरीवन वेरी क्विकली. In conclusion, based on the available data in scientific research, it is evident that climate change is primarily caused by human activities. The increase in greenhouse emissions from burning fossil fuels and deforestation has led to a significant rise in global temperature. यहाँ दो चीजें नोट करने वाली हैं. पहली, यहाँ एक conclusion है. Yes, there is a conclusion. 2, the conclusion is not mentioned in the end. It's mentioned in the beginning. So, the second thing that we understand here is that the conclusion can be written anywhere. It doesn't have to be the last line, last paragraph of what you're reading. So, 2, the conclusion can be visible anywhere. Now, it's very clear that this line, this specific line is a conclusion जो किसी और डेटा से ड्रॉ किया गया. डेटा क्या था? इंक्रीज ग्रीन हाउस एमिशन में हुआ है, फॉसिल फ्यूल बर्न करने से हुआ है, डिफॉरेस्टेशन से हुआ है. ये चीजें कौन कर रहे हैं? ह्यूमन कर रहे हैं. तो इसी लाइन से हमने ये ड्रॉ किया कि ह्यूमन इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज. Is it clear which line is the conclusion and how are we supposed to identify the conclusion, everyone? एक बार जल्दी से मुझे thumbs up दो, और उसके बाद मैं आपको एक और लेंदी और पैराग्राफ दूंगी कंक्लूजन ढूंढने के लिए. Yes, तो प्रांजलि, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप द वर्ड. ये जो वर्ड है ना, लाइन है, इसको हम बोलेंगे प्रेमिस. प्रेमिस होता है डेटा, इंफॉर्मेशन, थ्योरी जो आपको कंक्लूजन निकालने में हेल्प करती है. तो ये चीजें ना आपका धीरे 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 हमारी दीवारें खड़ी हो रही हैं, और उसके बाद हम अपनी छत बनाएंगे. तो ये मुझे दिख रही हैं, ये विजिबल है, ये डेटा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये एक्सप्लेनेशन है. इसी के थ्रू हम कंक्लूजन निकालते हैं. सो प्रेमिस और कंक्लूजन दो वर्ड है जो हम बहुत बार यूज करेंगे. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. आई थिंक सबको ये समझ में आया. ठीक है, आर्ग्यूमेंट
था क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब मैं आपको ना कुछ 3 पैराग्राफ्स दे रही हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 पैराग्राफ्स दे रही हूँ आपको। इसमें इन पैराग्राफ्स में से पूरे पूरे पैराग्राफ्स को प्रेमिस और आर्ग्यूमेंट, प्रेमिस और कंक्लूजन में डिवाइड करना है। कौन सा पैराग्राफ प्रेमिस है और कौन सा पैराग्राफ कंक्लूजन है, दैट्स व्हाट यू हैव टू सी आउट ऑफ द 4 पैराग्राफ्स। एक पैराग्राफ कंक्लूजन है, 3 पैराग्राफ्स प्रेमिस है, कौन से है आइडेंटिफाई कीजिए। आई जस्ट राइट द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, 1 2 3 4। Which paragraph is the conclusion here, everyone? Is my question. Okay, here you go. Since I don't have any answers from you. The first paragraph is a premise, second is a premise, third is a premise, the last paragraph is a conclusion. First, second, third, these paragraphs give us information that leads us to drawing this line. Okay, now I have answers. Pranjali says, fourth is conclusion, fourth Zoya, fourth Amruta, absolutely correct. These were set of information. जैसे greenhouse gases, ये पिछले ही example का एक extension है. जैसे greenhouse gases है, we have gas emission, we have global temperatures, melting ice caps. All of these are basically, this part is introduction. We have more data adding up here. And based on this available data, we drew a conclusion that climate change is caused by human activities. The increase in these from burning fossil fuel deforestation has led to significant global temperature. That also is a part of a premise. If I don't mark the entire paragraph, the entire argument is only and only this line that we have. I hope it is clear how to differentiate between the argument and the conclusion, everyone. So, what was the first pointer that we learned? The first pointer that we learned was that when we are trying to find the argument, if there is a conclusion in the passage, that is the argument. So, we have to focus on identifying the conclusions. That's pointer number 1, everyone. Let's focus on pointer number 2. That's an extension of pointer number 1 only. It's going to be with a little bit different language though. So, the extension of pointer number 1 is look for indicator words. What are indicator words? देखो कुछ simple indicator words तो हो गए does and therefore, but ऐसे direct words अगर ना हो तो एक example देखिए, read this paragraph very carefully और देखिए क्या आप कुछ indicator words के साथ conclusion निकाल पा रहे हो या argument निकाल पा रहे हो? दो इंडिकेटर वर्ड्स मुझे हाईलाइट करके बताइए, कौन से इंडिकेटर वर्ड्स है जो आपका अटेंशन ग्रैब करते हैं टुवर्ड्स द कंक्लूजन्स? What are the two indicator words? Exactly. Consequently. Now you see, as a result and consequently. As a result denotes conclusion, but consequently
denotes a course of action which is a suggestion by the author. And remember, author's opinions play a very important role in our ability to identify the argument. So this is one of the indicator words out of many that should grab your attention if you're trying to identify the argument. How consequently works here? By grabbing our attention to the author's claim. This line is the author's claim. ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. The author के claims और author के claims ही, yes, are your argument. So highlight कर देती हूँ argument. Stricter regulations are necessary to curb the detrimental impact of smoking. चलिए अब थोड़ा सा रीडिंग करते हैं. ये पैराग्राफ पढ़िए, मुझे बताइए प्रेमिस कौन सा है, आर्ग्यूमेंट कौन सा है. Can you highlight some indicating words for me here? Exactly, Amrita. First is the premise, second is the conclusion. Furthermore, might look like an indicating word, but it is not. It merely adds up to some premise that's already given here. मतलब ये premise का part 1 है, furthermore के बाद premise number 2 हो जाता है. एक ही paragraph में premise भरा हुआ है इधर. Furthermore सिर्फ extend कर रहा है premise को. Basically as a result हम उसका output देख रहे हैं. Conclusion नहीं देख रहे हैं, हम output देख रहे हैं और ये output वर्क कर रहा है. सिमिलरली कॉन्सिक्वेंटली की तरह यहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है. सो हियर इट वर्क्स लाइक अ कंक्लूजन फॉर अस. सो द 2 पॉइंटर्स वी डिस्कस टुडे वर ये रहा. ठीक है. सो द 2 पॉइंटर्स वी डिस्कस टुडे वर 1, पे अटेंशन टू द कंक्लूजन, and 2, look for indicating words. In the next class, we're going to work on the remaining 3 more ways of identifying the argument in the next class. And after that, we're going to be working on focusing on strengthening and weakening the argument type questions. Don't leave the class without hitting the like button, everyone. Also, if you wish to prepare for CLAT 2024, see us in the batch very soon. We've launched a batch recently. That's the number of our counselors. They'll let you know more about the program. You can also avail for a 3 days free trial. So attend our classes. Jaldi aao class mein. Enroll kar lo. Prepare with us and have a lot of fun while you prepare. Don't leave the video without subscribing to the channel, commenting under the video if you're watching it recorded. Follow us on all our social media handles. Subscribe to our YouTube channel. Follow us on Instagram, Facebook, Telegram. Download app on Google Play. I shall see you in the next class next Friday again. Have a very good weekend. Work very hard. Read a lot. God bless you.